बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हसनैन। आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। द लास्ट टाइम वी हैड अ मैग्निफिसेंट टॉपिक अबाउट नाउन। अगर आप सबको नाउन के बारे में नहीं पता, ऑफ कोर्स आप सबको पता है नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस एक्सेट्रा, ये सबको पता होता है। बट क्या आपको सारा कुछ पता है नाउन के बारे में? जिस तरह आइडियाज़ भी नाउन का एक हिस्सा होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, सो यू गाइस कैन चेक आउट माय अदर वीडियो, देयर विल ईदर बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या आप लोग मेरे चैनल पर जाकर यू कैन फाइंड द लास्ट वीडियो अबाउट दैट। नाउ फॉर सम पीपल दैट आर वाचिंग इन शॉर्ट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम मैं शॉर्ट के अंदर इन शॉर्ट और या क्विकली मैं एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। सो इफ़ यू वांट फुल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यू गाइस शुड गो अहेड एंड वॉच द होल वीडियो। अब वी लेफ्ट ऑफ फ्रॉम नाउन केस। अब हर एक डिफरेंट टॉपिक जो बड़ा ग्रेजुअल या हम कह सकते हैं एक बड़ा डाइवर्स टॉपिक होता है, दैट इज़ बिग, लाइक nouns for example 9 types, pretty diverse and variety, has a big variety if I'm being honest. So every single one of these type of cases that has specifically like case, every single part of speech or every single diverse grammar topic has cases in it. These are case scenarios that, for example, last time we had a question that if we use the word monkeys, so will monkeys be a proper noun or will they be a common noun? Because we are not specifying to a certain species, but we are not saying animals because we are specifying that they are monkeys, but which type we are not specifying. Now that was a wormhole that we found out in our language. Now today we are going to be doing more of these different cases and we are going to be understanding some confusing stuff. Nominate, there are in total a lot of them, so we will be going ahead, and there are around about I think 9 something again of these. So there's subjective noun case, objective noun case, possessive noun case, vocative noun case, dative noun case, objective proposition noun case, that's a case but noun case मैंने नहीं लिखा, appositive case, accompaniment case and objective complement case. Now these are a total of round about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I was correct. 9 different cases. Now each of these cases has a special and has a special scenario to it. We are going to be exploring what those scenarios are or what those scenarios certainly do. So first of all, we have subjective nominative case, nominative or subjective noun definition. A noun is said to be in the nominative case if it is the subject of a verb. जब एक verb का subject होता है एक noun, so in that case scenario the noun is a subjective or a nominate noun or whatever you want to call it. Subjective noun से हमारा मुराद है that when the noun is a subject. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है that Ali is working. तो यहाँ पर Ali is a subjective noun and this is a subjective noun case. Now let's go further. Example, Mr. Ali and Ahmad are intelligent boys. Mr. Ali और Ahmad intelligent boys हैं. तो यहाँ पर subject क्या है? This is the subject with us and this is for example are intelligent boys. Intelligent boys, this is explaining about them कि ये किस किस्म के बॉयज़ हैं, सिफात बयान कर रहे हैं. दिस इज़ एन एडजेक्टिव, दिस इज़ अ नेम फॉर देम और अ नाउन फॉर देम. द पेंटर इज़ पेंटिंग द हाउस, सॉरी. द पेंटर हमारे पास यहाँ पर फिर से सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है. इसी तरह पेंटिंग हमारा यहाँ पर वर्ब आ गया, हमारा वर्ब आ गया. फिर इसी तरह हाउस हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हमारा है ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट. हैना या हेना, depending on whatever you want to call it, but if it was I, so I believe Hina, and if it was A, so Hannah. So Hina is teaching. It's not giving a lot of explanation, but that's just the subject which you people all know about probably. Subject, and there's the verb. So those are two of the most examples that we have. You know, this is a quite simple case scenario. जिस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, the more further we go into the cases and the more further we go, so it's going to turn into more complex cases and it's going to be a bit more heavy and hefty in comparison to all the other cases. So let's go further and beyond.